Thank you and welcome to all the speakers here. The session is about Mizoram. We'll hear from our speakers about Mizoram. So first I'd like to invite Dr. Zothang Chingi Khyangte. To all of you gathered here, Mr. Chairperson, the Director of Tribal Research and Studies, and the Director of Ram Dayal Munda Tribal Research Institute, Mr. Kumar. Kumarji, I would like to convey my, admiration for you, because I have been noticing that you have been the one to actually, take this stole in order to welcome our guests, and that is actually, I would say, something which is usually not done in a very patriarchal or hierarchical society. And I would not also be so easy to say that, to agree with you either, because I'll be touching upon that as well today. Because tribal societies are also very patriarchal by nature. There are gender nuances. We are very easy to, on dismissing tribal societies, especially the northeastern societies, as being very, very gender neutral and all that. So anyway, when I got this invitation, I was wondering. Actually, I had told Miss Tarun also that I hope you are aware that I'm not from Mizoram. I'm a Mizo, but I am not from Mizoram because I'm affiliated to Bodoland University, as you know, and I was actually brought up in Assam. So I am actually a diasporic community, belonging to diasporic Mizo community. So we hardly touch upon this Mizo diaspora, by the way. So in future we should also, I think we should look into that, especially the Tribal Research Institute. We take for granted that, if I am a Mizo, then I should be from Mizoram. So that is actually taken for granted usually. Or if I'm a Naga, I must be from Nagaland. And people who are invited actually have to come from Nagaland if you are going to talk about Naga issues. But sometimes that actually, does not say it all. But anyway, thank you once again, therefore, Tribal Research Institute, for having invited me here to speak on behalf of the Mizo community. So I've been wondering actually what to talk about. So when I received this invitation, I was in Delhi and for the Sahitya Academy. Then I had given an extract of my research paper. But then again, while coming here this morning, as we were talking yesterday with Mr. Kambe and Mr. Joseph and Madam Sarah, so I just changed my mind this morning, and I would like to talk about some other issues that is closer to my heart, and how I can relate with the students here gathered. And so I will be talking about becoming Mizo. So I'll take this point from by quoting Stuart Hall from his Cultural Identity and Diaspora. I quote him first. I'll take my approach from there. There are critical points of deep and significant difference which constitute what we really are, or rather, since history has intervened, what we have become. We cannot speak for very long with any exactness about one experience, one identity, without acknowledging its other side, the ruptures, the discontinuities, which constitute our identity. So as Mizo, or as a Naga, or as a Bengali. Well, in this way, cultural identity is a matter of becoming as well as of being. It belongs to the future as much as it did to the past.
It is not something which already exists, transcending place, time, history, and culture. So cultural identity comes from somewhere. They have their histories. But as we all know, many scholars gathered here today are from history. Well, like everything which is historical, identities or cultural identities also undergo constant transformation. Far from being eternally fixed in some quintessentialist past, they are subject to the continuous play of history, culture, and power. This is very important. There is a continuous play of history, culture, and power. So there comes the power dynamics also into the construction of identity. So far from being grounded in a mere recovery of the past, as Stuart Hall would say, which is wanting to be found and which will secure our sense of ourselves into eternity. When found, identities are the names we give to the different ways we are positioned by and positioned within a narrative of the past. So let me give you an example, since many students are gathered here today. So what makes us, claim a distinct identity? Say it happens, in such a way that it depends on what positions you are taking or which positions you posit yourself within. Say, for example, I belong to a gay community. Then I claim the identity, a separate, distinct identity as a gay person. And I, as a woman, would claim a distinct identity which is different from men. So, taking from that, let us come to the question of what was Mizo culture in the past. And does it remain the same in the present? So, in order to come to this, let us look. I being from literature, let me get a little literary here. So, looking at the poetic compositions of pre-colonial and colonial and post-colonial, let us try to interpret the cultural change that has taken place over the years in the context of the Mizos. The pre-colonial compositions had more to do with the rhythm, the musical, than it had to do with the textual content. After contact with the Christian missionaries, the compositions began to be in line with the Christian hymns that had to adhere to the textual fidelity. In the first decades of the 20th century, Christianity had not been embraced by many, but it definitely was becoming a force to reckon with. Actually, just to take a detour, the British came into contact with the Mizos only by the end of the 19th century. So, Mizos had transitioned from orality to writing only by the start of the 20th century. So in this, coming back to that poetic composition, so in this poetic tension that existed between the old and the new, the first giving more importance to the melody or the rhythm rather than to the textual content, the new again being influenced by the Christian missionaries or the Christian hymns, the hymnal songs, which were very much making a big impact on the poetic composition. So between this old and the new, there came the Pumazai. The Pumazai came up. As a reaction, Zai actually can translate into song in Mizo. So the Pumazai came up as a reaction against the Christian form. It was more robust in style and offers the mood of festivity. So in 1907, according to Thirumal and his colleagues, this musical form was patronized by the Lushai chiefs of the north in the form of a festival in which the eye ceremony was performed. Here in the eye ceremony, it was a kind of a ritualistic tradition where, mithuns would be sacrificed and there would be feast of the, given to the public. And so there was huge participation and the festivals ran for days on end. Then the festival, in fact, according to one of the most renowned academicians, R.L. Thanmoya,
The festival produced an ecstatic and rapturous community, with its compelling, irresistible rhythmic dance, which we again now still observe in the churches, which we will come to that later. And I have my own theory regarding that also, which we will come to that. Then we fast forward to the post-colonial and post-independence period. The most significant period in Mizo history in the post-colonial context is the Rambuai, which can easily translate to the troubled land. So it was the darkest period in Mizoram, in Mizo history. So the impact of this period to literature and to Mizo culture may be likened to what Barbara Harlow called as a radical disruption in Palestinian literature, which was brought about by what was known as the disaster year, or the Nakba, the 1948, in Arab historiography. So this profound break in Mizo history has also brought a radical change to the Mizo becoming. Okay, so this change, in fact, may be witnessed in the poetic compositions of one of the most celebrated Mizo poets, Rokunga. Well, I am also giving importance to the literary compositions, although we are focused on culture and history. But literature cannot be separated from culture and history. We all are very familiar with the Bhakti movement, also the Bhakti poetry, which was one of the most central of Indian cultural movement. So there is similarity if you look at the Pumazai and the contemporary trance-like dances in the church, which is quite similar to Bhakti if you can trace that similarity, by the way. So, but I'm not here to talk about Bhakti today. So this Rokunga's literary production expands from the 1930s to the 60s. That's why I have taken him up. That's one reason, and the other being that he is actually called we can say that he was the architect of Mizo ethno-nationalism. So in his poem, Kanzo Tlang Nom, which was composed sometime in the early part of the 1940s, the poet is enraptured by the scenic beauty of his homeland, the natural beauty of his homeland. He sings of the trees, the flowers, the birds, and also the streams, the rivulets, the hills, and all forms of life that make his Zoram a paradise on earth. So in similar tone, his poem, Mizo Kanni Kanlome, we are glad we are Mizos. That's how it translates. The poet rejoices in his birth as a Mizo. So he takes pride in his identity as a Mizo, and he encourages his people to rejoice in their Mizo identity. The 20th century was, in fact, when he wrote that poem, was witnessing the beginning of Mizo, ethno-nationalist consciousness as a people uniquely Mizo in spirit. So, and so this ethno-nationalistic spirit reverberated with indomitable spirit of an identity that was ready to come out from long years of isolation. His poem Mizo Kanni Kanlome reflects the idea of Mizoness that is optimistic of a harmonious future of friendship and good faith. So the poet advises his people to extend, this is very important in fact here, this line, the poet advises his people to extend their friendship to people of other communities. I quote that very line. Nam dangtem husit me lovin shiantra aisya mango. Let us not disregard the others, the people belonging to the other communities, but let us extend our friendship to them. But the tone changes abruptly in his later compositions. A radical, disruption of literature, which has been caused by the troubled years. His 1966 poem, Harla Harla,
reflects the political mood of the period. Harla Harla is a very, very important, song and poem composed to be sung, in fact, which had also become one of the most popular songs during the Mizo movement. So in this particular poem, the poet adopts a more revolutionary tone, and there is a sense of urgency and his poetry, a sense of urgency in his poetry, which was absent in his earlier compositions. There was no sense of urgency, mind you, in his earlier compositions. So he adopts a revolutionary tone here. The earlier mood in the earlier compositions was that of contentment, and there was a tinge of humor. But that mood of contentment, complacency, and tinge of humor is replaced by a sense of urgency, uncertainty, and suspicion. Now he says, "Awake, Zoram." I'm taking it from Mafa's translation. "Awake, Zoram, lest you should be late. Make haste, make haste. Hark the chime of freedom bell. Oh, say who is this unknown outlander, Tsinkwal, an unknown outlander, a stranger." So he warns his people against that unknown stranger. Eheu, eheu, but Mafa actually in his translation ignores these vocables, eheu, eheu, because it cannot be readily translated into English, but the so-called meaningless vocable actually conveys a sense of urgency. He is the master of deception. Eheu, eheu, he is the master of deception. So the stranger might come with as a person to deceive you, as a deceiver. So he will hypnotize and enchain you. So the trust here is broken, and the faith on the managers of the republic, using the phrase from Sanjeev Borwa, is doubtful. One of his last poems, Romin Rea Sakangche, which was composed somewhere in between 1966 to 1975, it cannot be actually ascertained, which is adopted as the state anthem now, is an invocation to God, seeking for his guidance and blessings to the people. But the invocation is not to God, the pre-Christian Pathian, but the Christian God Pathian. After faith in men is lost, it is in God that hope is sustained. Now, the poet now hopes that only God can lead his people to victory. This focus towards God and spirituality, since the Rambwai is an important ingredient that marks the Mizo culture and literature, since studies, as we know, have shown how religious can be an important element in coping with an oppressive social order. So it may be also noted that post-Rambwai, the novel is the more preferred literary genre compared to poetry. So, however, during the 1960s and 70s, 60s to 1987, there was a surprising lull in literary activities. This was because of certain reasons. In fact, Ozama and Van Chiao, in their Rambwai literature, suggest that Mizo writers were reticent about memories of the period for their literary works because the memories were too painful to express. Then, according to V.L. Luna and To Chong, the primary reason behind the lull in literary productivity is that literature written before and during the years of insurgency was burnt either by the soldiers or by the writers themselves. This instance of the official repression is fictionalized by James Dokuma in his novel Silai Mungai Om, The Beloved Bullet. Not the bike bullet, but this bullet. So, which was written in 2012. When Sang Lura's love letter to Ramliani, the fictional character, was intercepted by the Indian soldiers and classified as an MNF document for the sole reason that they could not read and understand Mizo. So people were arrested and accused as spies and informants if they were found in possession of any written documents, be it as harmless as love notes.
So most of the literature which was produced after 1987 had its setting had its setting as the Rambwai, but it was not until almost 2 decades later that memories of the painful experience were revisited and narrated. So, K.C. Lalvunga's 1989 novel Nunnakong Trampuya is also set against this backdrop of the Rambwai. The novel's focus is not so much on the atrocities committed during the Rambwai as on the impacts of the Rambwai on individual lives, such as in this particular novel, he writes about the protagonists Nur Thansangi and Chuan Vora. Nur Thansangi, interestingly here, which is Nur Thansangi can be a representative of many women who have been, who have experienced, much violent sexual exploitation during the time. So Nur Thansangi, who is forced to marry a captain of the Indian army, Captain Ranade, is duped and sold into prostitution by her husband, who turns out to be an already married man. So her healing comes only after she returns back to her land, where she experiences a spiritual transformation through a religious redemption with the help of a pastor and her husband Chuan Vora, whose character is constructed as the ideal Christian man. You see, the woman who is already exploited, who is in fact, so-called quote and unquote, taken and used, can come through only, from a man, a Christian man, ideal Christian man, or the ideal Mizo man. The Tlomngai man, in fact, about which Mr. Joseph had just a few minutes ago talked about. So the idea is that the self-defeating spirit of the Mizo sinner can be redeemed only through spiritual intervention. Now, and then again, it is in Zorami, which is written by Malsomi Jacob, that the painful past is revisited. The earlier novel, which I just talked about, the writer was a male. And now again, in Zorami here, the writer is a woman, a female novelist, and so the story is in fact revisited and re-narrated from the perspective of a woman. The story of Zorami, which is an eponymous character representing the land as well as the woman. So the story is revisited and told from the perspective of a woman on whose body is written the hurt and shame of that which is rendered unspeakable. So this is where we come to the unspeakable histories. Hers is the story of the many whose painful experiences have been silenced and undocumented. Jacob here very skillfully demonstrates how the cultural repression against articulating such traumatic memories makes it impossible for the victims to recover. Instead, the trauma remains lodged until it completely destroys them and robs them of every happiness. Faced by the impossibility of recovery, relying on her strength alone, the novel ends with the protagonist Zorami experiencing a spiritual epiphany that promises her a new beginning. She is resurrected as Lazarus was. I quote from the novel, "Then he calls out, 'Lazarus, come out.' Lazarus comes out. Zorami gasps. Something has happened. The weight that bent over and held her down is gone. The spiritual epiphany, the spiritual epiphany experienced by both Zorami and Nur Thansangi in the earlier novel is a phenomenon that continues to the contemporary Mizo spiritual culture. Sajal Nag, in his A Gigantic Panopticon, remarks that the trance-like dances are the result of women's traumatic memories which had been repressed and unaddressed, producing an intergenerational transmission of trauma. So, in fact, add to this, I would like to quote from M. Mino, who said, post-trauma, a community is faced with either, I quote from her phrase, too much, yes, I'll be coming to the conclusion, too much remembering or too much forgetting. So the later, too much forgetting is more apt for the Mizo community. So while coming to the conclusion,
While reconstructing a Mizo identity, it is imperative to facilitate healing in ways that can restore the dignity and confidence in a people who have experienced self-defeat and loss. Therefore, two important factors facilitate the becoming of the Mizo: religion and the second being reclaiming a mythic and heroic past. While the first one aids in the process of forgetting and overcoming a painful past, the later infuses ethnic pride in the contemporary mnemonic landscape. But one must remember that remembering and forgetting are rarely exclusive practices, and therefore the need to be mindful, of the crossovers has to be seen. Selective forgetting and partial remembering. In this, the question is, in our zeal to rebuild an ethnic pride, are we not constructing an identity founded upon masculinized memory of the Zolbuk? Remember, Zolbuk is unlike the maybe Giti or I don't know, but Zolbuk is particular only to the male youth dormitory, not for accessible for the females. So in the absence of the female in the post-colonial Mizo becoming is complete with the adoption of the male god Pathian as the supreme god representing the Christian god, replacing Kwazingnu, the female creator of the pre-Christian Mizo belief. Thank you. आदरणीय मंच में इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष और मेरे से वक्ता एवं 4 दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय डॉक्टर रणेंद्र जी, आयोजन समिति के सदस्यगण एवं अलग अलग राज्यों से आए विद्वानगण और रांची के विद्यार्थी और शोधार्थी, आप सभी को मेरा चिबाई और जोहार। आज मैं आपके समक्ष मिजो जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं तथा मूल विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं कुछ का पिक्चर जो है वो मैं दिखाऊंगी। बाकी विवेचन करने के लिए अब समय बहुत जा चुका है, गहराई तक मैं कुछ भी चीज़ में मैं जा नहीं पाऊंगी समय की कमी के कारण। इस कारण मैं कुछ का पिक्चर के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित मिजोरम सन 1972 तक असम राज्य का एक जिला था। 21 जनवरी 1972 को ये असम राज्य से पृथक होकर केंद्र शासित प्रदेश बना तथा फरवरी 1987 में ये देश का 23वां स्वतंत्र राज्य बना। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी आदमी की भूमि, यानी मी का अर्थ होता है आदमी, जो का अर्थ होता है पहाड़ यानी पहाड़ी, और रम का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। इस प्रकार मिजोरम का शाब्दिक अर्थ हुआ पहाड़ी आदमी की भूमि। जो भी पहाड़ी होते हैं वो सब लोग मिजो बन सकते हैं। इस प्रदेश की सीमाएं जो है वो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार और बांग्लादेश को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल 21,087 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी जो है 10,91,041 है। मिजोरम में लुसेई, राल्ते, मार, पांग, लखेर, मरा, पैते, कुकी, बोम आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। सामान्य तौर पर यहाँ की जनजातियों को मिजो कहा जाता है। मिजो शब्द किसी एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि कई जनजातियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। इन जनजातियों में लुसेई, मार, लाई,
और मरा, रालते आदि प्रमुख है, जिनकी अपनी अलग अलग बोली एवं इतिहास है। तथा ये मैं आशा करती हूँ कि अगले बार ऐसे मंच जहाँ आयोजित किया जाए तो इनकी सबकी अलग अलग बोली और इतिहास है, तो इनको भी यहाँ पर मंच पे बुलाने का कष्ट करें। इसके लिए मैं यहाँ से आवाज़ उठाती हूँ। मिजोरम से सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, तो अगले बार तो हम जो पहले सत्र में जैसे मणिपुर वालों का 7 जने आए हैं, इस प्रकार से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये सभी जो है सामूहिक रूप से मिजो कहलाते हैं। जैव विविधता, सांस्कृतिक एवं सामूहिक बोध, प्राकृतिक प्रेम, अपनी परंपरा के प्रति समान भाव जो है वो मिजो जनजाति की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती है। शेष भारत के लोग इस क्षेत्र की विशेषताओं से अनभिज्ञ है या कुछ भ्रांत धाराओं के कारण क्या है, कुछ ट्रस्ट सा हमें लग रहा है। इस क्षेत्र की विशेषताओं से सभी भारतीय जो है वो अभी तक मतलब अनभिज्ञ है। कुछ लोग हैं जो यहाँ जो पधारे, उनको तो बहुत जानकारी मिल चुके हैं, 4 दिनों से लगातार चल रहा है। लेकिन जो इस संगोष्ठी में नहीं है वो लोग, हम लोगों को क्या है, कभी नेपाली बोलते हैं, कभी तिब्बती बोलते हैं, तरह तरह के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ के जो विशेषताओं से अनभिज्ञ होने के कारण मैं आज मिजो जनजातियों की उल्लेखनीय विशेषताओं से अवगत कराने की कोशिश करूँगी। मिजो जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता है साझेदारी का समाज है। मिजो साझेदारी का समाज है। मिजो समाज साझेदारी का समाज है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर, परिवार और समाज का कार्य करते हैं। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। स्त्रियों के कार्य का बंटवारा भी बड़े ढंग से किया जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, वहाँ पर स्त्रियों के काम और पुरुषों के काम सब बटे हुए हैं। पानी और जलावन के लिए लकड़ी लाना स्त्रियों का काम है, तो इस कार्य के लिए आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराना पुरुषों का कर्तव्य है। जैसे लकड़ी काटने के लिए हथौड़ा, चाकू तथा लकड़ी को उठाने के लिए एम, हम इस चीज को एम कहते हैं। इधर ये है ना, हाँ, टोकरी ही कहेंगे हिंदी में। हाँ, पीछे हम लोग उठाते हैं। और नम जो है, ये इधर सिर में लगाने वाले जो है वो नम, उसको हम नम बोलते हैं। तो उसको बनाने का जो कार्य है वो पुरुष ही करते हैं। लेकिन पानी लाना और जलावन के लिए जो लकड़ी है उन सबको लाने का कार्य स्त्रियों का है। इसी तरह घर में चावल का अभाव होना स्त्रियों के लिए शर्म की बात मानी जाती है। लेकिन परिवार का आत्मनिर्भर ना होना और साल भर के लिए धान इकट्ठा ना कर पाना पुरुषों के लिए शर्म की बात मानी जाती है। इसके अतिरिक्त धान कूटना, नेक्स्ट, हाँ, इस धान कूटना और जिसको हम लोग बूदेन बोलते हैं और बूथेई बोलते हैं, मतलब धान को सफाई करना। इस तरह से हम लोग धान को सफाई करते हैं और उसके लिए हम लोग ठंगरा का इस्तेमाल करते हैं। जो गोल गोल है वो ठंगरा है। उससे हम लोग धान को बिनने का काम करते हैं, उसकी सफाई करते हैं उसकी। और आजकल भी ये परंपरा चालू है। आजकल अच्छे अच्छे चावल, बासमती राइस वगैरह उपलब्ध होने पर भी हमारे समाज में क्या होता है, धान को किसी भी हालत में उसको बिनने का जो कार्य है वो स्त्रियों पर है, स्त्रियां ही करते हैं। और जैसे पिक्चर में भी दिखाया है कि अपने बच्चों को धान जो है बिनने का जो तरीका है वो सिखा रहे हैं एक माँ। इस तरह से हर लड़की को धान बिनने आना चाहिए, ये स्त्रियों का कर्तव्य है। और परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़े, चादर, कंबल
ये सब बुनना जो है स्त्रियों का काम है। सिलना और बुनना स्त्रियों का काम है। और बुनाई और सिलाई में प्रयोग किए जाने वाले साधनों को पुरुष ही बनाते हैं। ये जो साधन है कपड़े बुनने का, नेक्स्ट उसको हम मिजो लैंग्वेज में, मिजो भाषा में थेम्बू, थेमथेंग, मुई, हेरोत, कोंगवुन आदि मतलब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रखा हुआ है, इन सब से और वहाँ एक औरत वो बुन रहा है, मतलब बुन रही है। इस प्रकार से हम लोग अपनी लुंगी, ये सब कंबल हो या कपड़े हो, सब इसी इन्हीं साधनों से हम लोग बुनते हैं। घर तथा घर के आसपास की सफाई करना और स्त्रियों का काम है। और ये घर बनाना और छज्जे की मरम्मत करना, ये सब जो है वो पुरुषों का काम है। बच्चों का पालन पोषण तथा जानवरों की देखभाल करना स्त्रियों का कार्य है, तो परिवार एवं समाज की सुरक्षा पुरुषों का कर्तव्य माना जाता है। घर में खाना बनाना, परोसना, बर्तन की सफाई आदि स्त्रियों का काम है, जबकि खेतों में खाना बनाना, परोसना, बर्तनों की सफाई आदि कार्य करना पुरुषों का है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि घर में पुरुष राज करते हैं और खेतों में स्त्रियां राज करती है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों का कहना है। और कुआं यानी तुईखुर, मिजो लैंग्वेज में तुईखुर कहते हैं। यहाँ की कुआं जैसे नहीं होता है, वहाँ पर झरने से पानी निकलता है, बहुत शुद्ध पानी होता है वो, तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको तुईखुर कहा जाता है। कुआं में क्या होता है, नीचे से अंदर से खोद के पानी को निकाला जाता है, लेकिन तुईखुर में तो उसका स्रोत होता है। तुईखुर में पानी लाना सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का काम है, तो लुहार से हथियार बनवाने का कार्य सिर्फ पुरुषों का होता है। किसी कारणवश यदि स्त्रियों को लुहार से हथियार बनवाने पूम जाना पड़े, पूम जहाँ लोहे की जो साधन है वहाँ जहाँ बनाई जाती है, उसको मिजो लैंग्वेज में पूम कहा जाता है। ये इधर की साइड जो है वो पूम है, पूम का चित्र है, और उधर की साइड तुईखुर का चित्र है। तो जब किसी कारणवश जैसे कि घर के जो पुरुष है वो बीमार पड़ गए, तो उसकी औरत जो है वो पूम में चले गए, या तुईखुर में यदि कोई पुरुष चले जाए तो सब पीछे हटकर सबसे पहले पानी उन्हें दिलवा देते हैं। तो इसलिए एक कहावत है कि पूम में स्त्रियां राज करती है तथा कुआं में या तुईखुर में पुरुष राज करती है। युवक युवतियां असहाय लोगों की सेवा करने हेतु दिन भर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, या एक दिन किसी के यहाँ तो दूसरे दिन किसी और के खेतों में हाथ बटाते हैं, जिसे मिजो भाषा में लोम कहते हैं। जैसे यहाँ पर खेतों में एक दूसरे की सहायता युवक युवतियां कर रही हैं। लोम के समय युवतियां को लोमनू कहा जाता है, और युवकों को लोमपा कहा जाता है। तो जो लोमनू है वो लोमपा के सारे सामान उठाती है और गंदे कपड़े आदि को धो देती है, फटे हुए कपड़ों को सिल देती है, क्योंकि लोम के समय स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष दुगनी शक्ति लगाती है। इसलिए उनका ध्यान रखना स्त्रियां अपना कर्तव्य समझते हैं। इस कारण ये सब युवकों के कपड़े धोना, कपड़े उठाना, ये सब काम युवतियां अपना कर्तव्य समझती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिजो समाज में साझेदारी का समाज है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये नहीं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट उन सब की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उधर की साइड में। और नंबर 2, समाज एवं अपनी क्षेत्र की रक्षा के प्रति सजग। ये मिजो जनजाति के पूर्वज अपने समाज तथा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए शुरू से ही सजग रहे हैं।
दक्षिण एशिया से स्थानांतरण के पश्चात वे लोग वर्तमान मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, म्यांमार में आकर स्थायी रूप से बसे थे। तब से चारों ओर के आक्रमणकारियों का मुकाबला उन्होंने डटकर किया है और इसी कारण वर्तमान समय में भी सीमावर्ती देशों, राज्यों जैसे म्यांमार, मणिपुर, असम, बांग्लादेश आदि प्रदेशों के साथ भी कई संघर्ष हुए हैं। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, इस मामले में बहुत संघर्ष हो रहे हैं, हो चुके हैं। और हमारी तीसरी विशेषता है, मिजो जनजातियों की तीसरी विशेषता है मानव जीवन के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। मानव जीवन के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करना मिजो जनजातियों की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। व्यक्ति नदी में गिर जाए या जंगली जानवरों का शिकार बने या पेड़ से गिरकर मृत्यु हो जाए या पहाड़ से गिरकर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ऐसी अनहोनी घटना घटने पर किसी भी हालत में शव को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया जाता है। सामूहिक रूप से लगातार 7 दिनों तक शव को ढूंढा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि मिजो जनजाति में मानवीयता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। मिजो जनजातियों के पूर्वज भले ही अनपढ़, निरक्षर, गंवार क्यों ना हो, लेकिन उनके विचार अत्यंत उच्च रहे हैं। और मिजो जनजातियों की चौथा विशेषता है मानवीयता का एक और उदाहरण ये है कि मिजो जनजाति अपने दासों पर कभी अत्याचार नहीं करते हैं। मिजो के पूर्वज अक्सर युद्ध किया करते थे। मैं इसलिए लगातार पढ़ रही हूँ क्योंकि समय की कमी के कारण है। तो मिजो के पूर्वज अक्सर युद्ध किया करते थे। युद्ध में हारे हुए लोगों को वे दास बनाकर लाते थे। युद्ध के समय समझौता प्रस्ताव लेकर आने वाले जो व्यक्ति है वो हरी पत्तियों से बनी टोपी पहनते थे। ऐसी स्थिति में संधि प्रस्ताव लेकर आने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। शर्त पूरी होने के बाद दासों को वापस कर दिए जाने की प्रथा इस समाज में रही है। उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है, स्त्रियों की कीमत मिथुन है और पुरुषों की कीमत दारख्वांग। ये मिथुन का चित्र है और ये दारख्वांग को मैं तबला करके रख रही थी लेकिन मैंने मिटा दिया। दारख्वांग को मैंने दारख्वांग ही रख दिया बिल्कुल इसलिए क्योंकि तबला से बिल्कुल अलग है। और आज तक जो लड़कियों की कीमत है, शादी ब्याह में लड़कियों की कीमत है वो 420 ही रही, क्योंकि उस समय ये सियाल यानी मिथुन का जो कीमत था वो 420 था। इसलिए आज भी लगातार अब मिथुन का दाम तो लाखों रुपए का हो गया, लेकिन लड़कियों की जो कीमत है वो 420 ही परंपरागत रूप से अभी तक रहे हैं। दासियों का भी इन्होंने विशेष ध्यान रखा जाता था। विशेषकर दासियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कभी नहीं किया जाता था। मिजो लोगों की मान्यता थी कि दासों पर अत्याचार तथा दासियों का बलात्कार करने वाले व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहते। इसलिए दास दासियों का देखभाल परिवार के सदस्यों जैसा ही किया जाता था। यदि दासों के परिवार वाले उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं आते तो मालिक द्वारा उनकी शादी आदि करवा देते थे और इसका उदाहरण समाज में बहुत पाए जाते हैं। इस तरह मालिक के जात का नाम ही दास दासियों के जात बन जाता था। नाम भी अपना मालिक जो है, अपना जात जो है उसका नाम है वो दास दासियों को दे देते थे। इस प्रकार मिजो के पूर्वज दास दासियों पर अत्याचार करने की बजाय वे उन्हें समाज का हिस्सा बना लेते थे। अब है 5वां विशेषता है ट्लोमंगना। मिजो जनजातियों में जो ट्लोमंगना है, जैसे मेरे पूर्व के जो वक्ता है इन्होंने भी जोसेफ है और ये हमारे मैडम जी है, इन्होंने भी ट्लोमंगना के बारे में इंगित किया था। तो ट्लोमंगना मिजो जनजातियों की खास पहचान है।
त्लोंगैना शब्द ही मिजो जनजातियों के मन में गहरा छाप छोड़ती है। त्लोंगैना का शाब्दिक अर्थ है निस्वार्थ सेवा, अर्थात फल प्राप्ति की चिंता किए बिना दूसरों की सेवा करना त्लोंगैना कहा जाता है। मिजो समाज में सुख और दुख के दिनों में सभी मिजो जाति के द्वारा एकजुट होकर फल प्राप्ति की चिंता किए बिना निस्वार्थ सेवा करने का चलन है। यही वजह है कि विभिन्न कार्यालयों में या कार्यस्थलों में विभिन्न व्यवहार वाले या शारीरिक रूप से कमजोर अपाहिज लोगों के साथ भी मिजो जाति संतुलन बिठाकर खुशी खुशी काम कर लेते हैं। त्लोंगैना की सीमा जो है वो अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत गरीब तथा असहाय लोगों की हर संभव सहायता करना, पीड़ित तथा शोषित वर्गों की सहायता करना, प्राकृतिक आपदाएं या अनहोनी घटना घटने पर दुर्घटना में फंसे लोगों की मदद करना आदि आते हैं। त्लोंगैना को जीवन प्रदान करने के लिए मिजो जनजातियों के पास जोलबुक व्यवस्था भी है, जो मेरे पूर्वज जो ने इसके बारे में भी, जोलबुक के बारे में भी कुछ बात कही थी। जोलबुक सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, जिसमें गांव का प्रत्येक युवक अपने गांव की रक्षा हेतु एक साथ रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अच्छी आचरणों की शिक्षा जोलबुक में ही सिखाई जाती है, जिसमें त्लोंगैना जैसे सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया जाता है। जोलबुक में महिलाओं का प्रवेश, जैसे पहले कहा गया है, निषेध होता है। और ये है हमारे जोलबुक का चित्र। उसमें युवक युवतियां रात में युवतियां नहीं युवक पहरा देने के लिए जोलबुक में रहते थे, सोते थे, और अचानक हमला होने पर भी वहां से तुरंत निकल के गांव की रक्षा करते थे। तो जोलबुक में रहने वाले युवक खूंखार जंगली जानवरों से भी नहीं डरता है। अपनी जान की परवाह किए बिना गांव की रक्षा करने के लिए वे किसी से भी भिड़ जाते हैं। और ऐसे वीरों को नौपुई, जिसे नेक्स्ट नौपुई ये बड़ा वाला जो क्या है, गिलास, नौपुई का मतलब होता है बड़ा गिलास। तो उसको पारंपरिक बड़ा गिलास जिसको कहा जाता है देकर उसको सम्मानित किया जाता है। पूर्व में नौपुई से ज्यादा सम्मान एवं गौरवपूर्ण पुरस्कार मिजो में कल्चर में नहीं होता था। नौपुई सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वीरों में प्रतियोगिता की भावना का होना स्वाभाविक था। सब लोग प्रतियोगिता कर लेते थे कि हम यदि सबसे वीर निकल गई तो हमें नौपुई जो है पुरस्कार के रूप में नौपुई से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए सब लोग इस होड़ में लग जाते थे कि सबसे वीर बन जाने की होड़ में सभी युवक लग जाते थे। इसलिए जोलबुक के सभी युवक नौपुई सम्मान को पाने के लिए आपस में संघर्ष या प्रतिस्पर्धा करते थे। मिजो जनजातियों में त्लोंगैना की परंपरा आज भी देखने को मिलता है। इसी त्लोंगैना के कारण सुख दुख के समय मिजो जनजाति एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब है दोस्ती निभाना। मिजो जनजातियों की एक और प्रमुख विशेषता है दोस्ती के नाम पर जान तक कुर्बान करने की प्रवृत्ति मिजो जनजातियों के में पाई जाती है। मिजो परिवारों में लगातार ये सीख दी जाती है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना है। यही कारण है कि खूंखार जंगली जानवरों हो या किसी ताकतवर व्यक्ति से टकराते समय मिजो युवक कभी पीछे नहीं हटते। डरकर उनसे वो लोग नहीं भागते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि इस जोखिम कार्य को करने से उनकी जान भी जा सकती है। उनका लक्ष्य केवल दोस्तों की जान बचाना होता है। इसलिए मिजो पुरुषों को पसलठा ताइतिसेन के इस वाक्य से पहचाना जा सकता है। पसलठा मतलब वीर पुरुष। ताइतिसेन की एक वाक्य मैं यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। यदि मरना पड़े तो मैं पहले मरूंगा,
तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये अपने दोस्त की के लिए कहा गया है। और एक और है, मेरे दोस्तों को चोट लगी है और मुझे अभी तक चोट क्यों नहीं लगी। मुझे पुआन मतलब मेखला पहन लेना चाहिए, ऐसे हमारे एक वीर पुरुष ताइते सेन ने कहा है। और है सातवां जो विशेषता है मेगालिथ या महापाषाण संस्कृति। म्यांमार के रून नदी और भारत म्यांमार सीमा पर बहने वाली टियाओ नदी के बीच सन 1400 से 1700 ईस्वी तक निवास काल से ही मिजो जनजातियों के पूर्वज बड़े पत्थर या शिलाखंडों का उपयोग करते थे। यहाँ जहाँ मिजो जनजातियों ने निवास किए वहाँ वे बड़े पत्थर के शिलाखंड लगाते थे। मिजो का मानना है कि उन्होंने पूर्व में मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश आदि स्थानों में भी शिलाखंड लगाए। ये परंपरा आज भी विभिन्न स्थानों में देखने को मिलता है। ये शिलाखंड का चित्र है, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ उभारदार चित्रांकन हुआ है, कुछ कुछ जो है वो हल्का चित्रांकन करने के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है। तो मिजो जनजाति पाषाणों का उपयोग मुख्य रूप से शवों के समाधि बनाने के लिए करते हैं। मृतकों की याद में उनके कब्र में बड़े पत्थर लगाने की परंपरा आज भी मिजो जनजातियों में पाई जाती है। जैसे कि ये आधुनिक ये कब्रिस्तान में पत्थर इस प्रकार लगाए, ये जो है इधर की साइड जो है वो पुराने ज़माने की है। तो इस तरह पाषाणों का प्रयोग निम्न प्रकार के लिए करते हैं। हल्का चित्रांकन करने के लिए और उभारदार चित्रांकन करने के लिए और मृतकों का नाम आदि लिखने के लिए। अब हम मिजोरम के त्योहारों के बारे में कुछ मैं प्रस्तुति करूंगी। तो त्योहार तथा उत्सव मिजो लोगों के जीवन का हिस्सा है। यहाँ के लोग पूरे वर्ष विभिन्न तरीकों से त्योहार मनाते हैं और उसमें से अधिकतर त्योहार उनके जीवन जीने के तरीकों पर केंद्रित है। संस्कृति किसी देश या प्रदेश की उन्नति का वाहक होती है एवं उसे पहचान दिलाती है, और मिजोरम अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मिजो जनजाति के लोग मुख्य रूप से 3 त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों को वे कब से मनाते आ रहे हैं ये कह पाना मुश्किल है। मिजो जनजाति का मानना है कि जब वे रून और टियाओ नदियों के बीच निवास करते थे, यानी 1400 या से 1700 के बीच से ही वे इन त्योहारों को मनाते थे। 19वीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए। ईसाई धर्म के आगमन के बाद मिजो संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचनाओं में जबरदस्त बदलाव आया है। यानी ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण इसमें काफ़ी सामाजिक संरचना में बदलाव आया है। आज मिजो के लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे, न्यू ईयर, ये सब जो है उत्सव है, ईसाई उत्सव है, वो बड़े चाव से मनाने लग गए हैं। तो लेकिन जो हमारी पारंपरिक जो त्यौहार है उसमें एक त्यौहार है चपचारकूट, उसको हम बड़े धूमधाम से आज भी मनाते हैं। तो चपचारकूट के बारे में मैं थोड़ा आपके समक्ष अपना ये विचार प्रस्तुत करूंगी। ये चपचारकूट में खेती के कब मनाई जाती है। ये चपचारकूट जब खेती के लिए जंगलों की कटाई के बाद उन्हें करीब 1 महीने तक सूखने के लिए रखा जाता है। तो इन दिनों क्या है, कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। तो उस अवकाश के जो समय है उस समय ये चपचारकूट जो है वो मनाया जाता है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष मार्च या अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अन्य त्योहारों की अपेक्षा चपचारकूट बड़ी धूमधाम के साथ कई दिनों तक मनाया जाता है और ये त्यौहार 3 से 7 दिनों तक मनाया जाता है। और
लोक विश्वास है कि पूर्व में सबचार अवकाश के समय गांव के कुछ नौजवान शिकार के लिए जंगल गए थे, परंतु वे असफल होकर खाली हाथ उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। तो शिकार से असफल होकर खाली हाथ गांव लौटना जो है वो मिजो जनजाति के लिए बड़ी शर्मनाक की बात मानी जाती थी। शर्म से सभी नौजवान शिकारी सिर झुकाकर गांव लौट रहे थे। तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसा कहा कि भाइयों, आप सभी शर्म से सिर क्यों झुका रहे हो? हम फिर शिकार के लिए निकलेंगे, आज नहीं तो कल हम अवश्य सफल होंगे। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। कल हम सब खुशी खुशी हाजू पिएंगे, हाजू पिएंगे और फिर हाजू का बड़ा मटका खोलूंगा, तुम सब छोटा मटका खोल देना, हम सब थकान मिटाने के लिए पिएंगे। हाँ, ये हाजू हाँ मटका है। इस प्रकार नेक्स्ट एक बार एक मिनट। इस प्रकार अगले दिन सब ने अपने अपने हाजू मटकिया खोले, फिर जी भर कर पीने के बाद बाहर मैदान में आए। कंधे से कंधा मिलाकर सभी नाचने लगे, जिसे चाय नृत्य का कहा जाता है। इस प्रकार चाय नामक नृत्य का आरंभ हुआ। अपनी प्रजाओं को इस प्रकार खुशी से झूम झूम कर नाचते हुए जब गांव के मुखिया ने देखा तो उन्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भी अपने घर से हाजू का बड़ा घड़ा उठाकर लाया और प्रजाओं के बीच शामिल हो गए। इस प्रकार प्रतिवर्ष सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर खुशी से इस दिन के त्योहार को मनाने लगे। इस प्रकार सबचार कूद की शुरुआत हुई। इस त्योहार के प्रथम दिन में सभी लोग शराब पीते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की योग है ये है कि कोई भी नशे में नहीं होते। शराब पीते हैं क्योंकि सभी ट्राइबल्स वालों का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, वो शराब से जुड़ी हुई है, हम सभी ट्राइबल्स वालों का। लेकिन ये मिज़ो में तो ये क्रिश्चियन मिशनरी के आगमन के बाद हमारे सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ गया है और शराब जो है वो सरकारी तौर पर भी अब मिज़ोरम में तो प्रतिबंध लगा दी गई है। तो हाँ, सरकारी रूप से भी प्रतिबंध है, शराब पीना बिल्कुल मना है अब तो। इसलिए सबचार को भी बिना शराब से मनाते हैं। तो उस समय में भी शराब तो पीते थे, लेकिन कोई भी नशे में नहीं होते थे। ओके। शाम होते ही गांव की औरतें चावल, मांस और उबला हुआ अंडा से भरी हुई थाली अपने अपने घर के बाहर मैदान में, जिसे लुंगदो कहा जाता है, पत्थर से बना मंच होता है, उसमें लाते और अपने बच्चों को भी जी भरकर खिलाते हैं और अपने अपने परिवारजनों व मित्रों के मुंह में ठूस देते हैं। दोस्तों के मुंह में ठूसने के लिए वे लोग एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ करते थे। परिजन एवं दोस्तों के मुंह में ठूसने को छोंग नोत कहा जाता है, जो अभी इससे पहले वाला इसमें अंडा वगैरह छोंग नोत, ये आधुनिक छोंग नोत है। हाल ही में अभी त्योहार मनाया गया था, उस समय का है। इस तरह छोंग नोत कहा जाता है। इस त्योहार के युवक युवतियां नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन एक दूसरे से झगड़ा करना, तलाक देना आदि जो है पाप समझा जाता है। सबचार कूद आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दूसरा हमारा जो त्योहार है वो है मीम कूद। मीम कूद हम इतने दूर से आए हैं तो थोड़ा जब हमने भी पूरे सुबह का सत्र धैर्य से सुना तो सुबह 7 लोगों का वक्तव्य जब इतना धैर्य से सुना तो हम दोनों का तो धैर्य से सुनने की कोशिश कीजिए प्लीज। फिर है मीम कूद। मीम कूद अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह में मनाया जाता है।
गांव के मुखिया एवं बुजुर्गों द्वारा इस त्योहार को मनाने का समय निश्चित किया जाता है। ये त्योहार मृतकों का माना जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे ngam और ट्लिंगी नामक दंपति की कथा जो है वो मैं आज सुनाना चाहती हूँ। ये कथासार इस प्रकार है। ngam और ट्लिंगी पति पत्नी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और अचानक ट्लिंगी की जो उसकी पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की याद में रोते रोते ngam जो है वो मूर्छित हो जाती है। तो उसकी आत्मा जो है वो मृत्यु लोक तक चली जाती है। उन्होंने ट्लिंगी को देखा, वे बहुत कमजोर और पतली दुबली हो गई है। कारण पूछने पर उसने ngam से कहा, यहाँ मुझे खाने पीने के कुछ भी नहीं दिया जाता है, अतः तुम फौरन वापस जाओ और मेरे लिए झूम की खेत से ताजा ताजा फसल लेकर आओ। तब ngam को जब होश आया, वे तुरंत खेत में जाता है और जो भी अच्छा फल सब्जी वगैरह है उसे मिले तोड़कर ट्लिंगी के लिए लाता है। परंतु उन फसलों को ट्लिंगी के कब्र तक ले जाने से पहले ही वे घर के अंदर पानी आदि रखने की जो जगह है उसमें फिसल जाता है। तो सारा जो फसल है वो वहाँ बिखर जाता है बस। और आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहता है कि ट्लिंगी यही आकर इन फसलों को और भोजनों को खा लो। कुछ दिन बाद ट्लिंगी की याद में वे रोते रोते ngam जो है वो फिर मूर्छित हो जाती है। तो मृत्यु लोक में फिर से उसे ट्लिंगी मिली। वे पहले से स्वस्थ और मोटी तकड़ी हो गई थी। ngam जब होश में आया तो उसने निश्चय किया कि वे प्रत्येक वर्ष नई फसल साग सब्जी मकई जो है उसको ट्लिंगी के नाम जो है वो चढ़ा देंगे। तो इस तरह वे प्रत्येक वर्ष अपने वादे जो है उसको निभाए। जब लोगों को इस सच्चाई का पता चला तो सब ने अपने मृतक परिजनों के लिए ngam की तरह फसल जो है वो चढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मिजो जनजातियों में मीमकूद को त्योहार के रूप में मनाना इस तरह आरंभ हुआ माना जाता है। तो त्योहार के इस दिन भी क्या है, व्यक्ति बाहर कोई भी काम करने नहीं जाते, सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों पकवानों को मृतक परिजनों के लिए ngam की तरह चढ़ाते हैं। मिजो जनजातियों का विश्वास है कि सभी मृतक परिजन मीमकूद में आकर चढ़ाए गए पकवानों को खाते हैं। इस दिन लोग उनकी याद में सिसकियां ले लेकर रोते थे, उनकी याद में गाना गाते थे। मृतक परिजनों की याद में लोगों के अत्यधिक रोने के कारण मीमकूद को रोने का त्योहार भी कहा जाता है। इनका मानना है कि मीमकूद के 3 दिन बाद मृतक जो है उसकी आत्मा जो है वो मिथिकुआ में चली जाती है और इसी कारण अगस्त महीने को हम लोग थिट्रिन था बोलते हैं। अगस्त महीने का नाम जो है वो थिट्रिन था हम लोग बोलते हैं। और इस दिन शादी वादी कुछ भी हमारे समाज में अगस्त महीने में नहीं होता। शुभ काम जो है वो अगस्त महीने में नहीं होता है। तो इस तरह मीमकूद वो आया, लेकिन ईसाई धर्म के अपनाने के बाद मिजो समुदाय में ये मीमकूद जो है वो अंत सा हो गया है। अब नहीं मनाते हम लोग मीमकूद को। उसी प्रकार पोलकूद जो है एक और मुख्य जो त्योहार है वो है। 3 त्योहार थे, उनमें से ये लास्ट त्योहार है। मैं अपनी बात ख़त्म करने जा रही हूँ। ये त्योहार फसल की कटाई के बाद प्रतिवर्ष दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाए जाते हैं और इस त्योहार को बच्चों का त्योहार भी माना जाता है। कहते हैं कि 1520 और 1550 के आसपास मिजो समाज में 3 साल तक भयंकर अकाल पड़ा जिसे थिंगपुईटाम कहा जाता है। चौथे वर्ष में फिर से काफ़ी अच्छी फसल हुई तो गांव के मुखिया ने कहा 3 साल के बाद अकाल के बाद इतने अनाज आए हैं तो हम सब जो है इस खुशी में अपने अपने जू जो है शराब जो है उसको मटका निकालेंगे और रात भर हम लोग जश्न मनाएंगे।
तो इस प्रकार इस पोल कूद को भी हर वर्ष उसी समय मनाने की प्रथा चलने लगी। त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाए या ये गांव वालों की तैयारी एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता था, परंतु यथासंभव त्योहार की बड़ी धूमधाम एवं हंसी खुशी के साथ मनाने के लिए गांव वाले सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध एकजुट होकर इसको करते थे। इस प्रकार ये तीनों त्योहारों में से चपचार कूद ही आज तक प्रचलित है। जैसे मैंने कहा, इन तीनों जो मिजो त्योहारों में से चपचार कूद ही आज तक प्रचलित है। आज मिजो लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ये सब जो क्रिश्चियन की जो फेस्टिवल है उसको ज़्यादा बड़ी धूमधाम से मनाने लग गए हम लोग। फिर इस प्रकार विश्व के अन्य जातियों की तरह ही मिजो जनजातियों के बीच विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य को विभिन्न अवसरों पर किए जाने की प्रथा है। और मिजो की जो नृत्य है उसमें छैलाम है, चाय है, चेरो है, और ये चेरो जो नृत्य है ये तो पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया था 1916 में। पूरे ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बेम्बू डांस कई लोगों के नृत्य रहे हैं उनमें मिजो वालों का जो चेरो है वो सबसे प्रसिद्ध कही जा सकती है। और ख्वालाम है, और ये छैलाम भी दो ये क्या बोलते हैं, गोला बनाकर दो एक युवक एक युवतियाँ डांस करती है। इसी प्रकार ये चोंगलाई जोन और ख्वालाम भी एक तरह से अतिथि सत्कार के लिए ख्वालाम का नृत्य किया जाता है। इसी के साथ में आप लोगों ने इतना मुझे सुना, इतना धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाय। The director, Mr. Chairman, everyone, Tibai, Johar to you all. In the first slide, we see a picture of a young Gorkha girl, a young woman rather, and a bit older Gorkha woman dressed in a traditional Mizo clothes. So, first of all, I am grateful to the TRI and the organizers for inviting me to this prestigious seminar, and it is such a joy for me to come and see the beautiful city of Ranchi. My topic is about the Gorkhas of Mizoram, and the topic is the Gorkhas of Mizoram, the silent community. Many of you may feel that why is this Mizo woman doing a paper on the Gorkhas, while there are many things about the Mizo to talk about? You may feel that way, but well, let me try to explain. The Gorkhas have been living in Mizoram for more than a century. They came and settled even before Christianity arrived. So, they have been present in all historical events of Mizoram since the colonial period. However, the Gorkha story in Mizoram has never been told before, and they have remained a silent subject for many years. So I am trying to tell their story and trying to explain the Mizo influences that are reflected in the Mizoram Gorkhas today. I also feel that by telling the Gorkha story, it may enrich the theme of the seminar, which primarily deals with the diverse cultures of Northeast India, as the Gorkhas of Mizoram have no other home other than Mizoram. So, for the brief introduction, Mizoram was known as Lushai Hills during the colonial period, starting from 1890 to 1947. It became Mizo Hills District in 1954, and in 1971, it was elevated to a union territory status and renamed Mizoram. Mizoram attained statehood in 1987. And the people inhabiting Mizoram are called Mizo, which is a generic term meaning highlanders. In the colonial period, they were referred as Lushai. The Mizo consists of several clans such as Lusei, Mar, Paiteral, Telai, and Mara. There are also Chakmas, Riangs or Bruce, Shankol, etc.
and a sizable number of Gorkhas living in Mizoram. In fact, the Gorkhas were the first non-Mizo to permanently settle there. Next, please. Yes. Movement of Gorkha in the Northeast. The Gorkha contact with the Northeast. The arrival of Gorkhas in large scale began with the annexation of the Northeast by the British. The establishment and consolidation of British rule facilitated such migration to the region, which was primarily from Nepal and to some extent from Darjeeling and Sikkim. After the Anglo-Gorkha War, the British started recruiting Gorkhas for soldiers in large number. They were able-bodied, quick, brave, and loyal. Being used to mountainous and hilly rugged terrain, they were swifter than the other Indian native soldiers. So the first direct contact between the Nepalese and the Northeast appears to have occurred in 1817, where a number of Gorkhas from Cuttack Legion took part in the Sylhet operation. And apart from recruiting them in the army, the Gorkhas were also recruited for porters in large number, as movement in the unexplored region meant to carry huge supplies for the soldiers. So the soldiers and the porters were the first Gorkhas to set foot in the region. And the British encouraged the Gorkhas to settle down in the region. They recognized early that these hilly people, as hardy hill cultivators, could constitute an ideal group with which to penetrate and form strategic buffers in the Northeast, and even more than this, actually change the composition of the local population in some Northeast hill areas. In this way, certain compact pockets of Gorkha settlements in Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, and Manipur emerged. Likewise, in Mizoram, the soldiers and the porters settled first and acted as a buffer between the British administrators and the Mizo people. The retired Gorkha soldiers, with their hard work, perseverance, and investment of their pensions in agriculture, they have been able to turn out their newly acquired settlements as thriving centers of prosperous peasantry. Slide, please. So we'll come to the British contact with the Mizo. The early contacts between the British and the Mizo were on hostile grounds. The British had expanded their economic interest in Qatar and Sylhet Plains by planting teas in huge areas. The Mizo started attacking these tea gardens as the tea plantations intruded their territories, which served as their hunting grounds. There were a number of expeditions, and I will take a look at the two Let's take a look at the two important ones. The first one is the Lushai expedition of 1871 to 72. I'm sorry, there is a mistake there, please. Okay, it's 1871 to 72. I'm sorry. Yes, it's a typo, a huge error. In January 1871, Alexanderpur was attacked, where James Winchester was shot down by the attackers, and his 5-year-old daughter, Mary Winchester, was taken captive. These attacks had a far-reaching impact on Mizoram and resulted in the first Lushai expedition, by which the British felt the need to carry out an extensive armed expedition in order to prevent the recurrence of these outrages. It was in such spirit that the expedition of 1871 set out in two columns, one from Chittagong and one from Cachar. In this expedition, the Gorkhas proved to be handy and swift in the thick, unexplored jungles. L.W. Shakespeare mentions that a bridge was needed to build at a certain place. While the sapper was busy working out the plan, the Gorkhas of 42nd Assam Light Infantry cut down bamboos and trees, thereby completing a rough but efficient bridge. Henceforth, matters of this nature were left to the Gorkhas. From preliminary scouting work to building timber, slides over many rocky falls, the Gorkhas were the ones who did the hard work. T.H. Lewin, the superintendent of hill tribes in the Chittagong hill tracts, was greatly impressed with the 2nd Gorkha Regiment's work in the expedition. Next. This is a picture of the landing Gorkha soldiers in Chittagong, circa 1870s.
Please go back to the previous slide. Okay, thank you. The expedition of 1871-72 was fairly successful for the British. Frontier posts were set up to maintain peace in the hills. The main frontier post was now moved forward to Tlabung, also called Demagri, where Lewin wanted to build Gurkha villages. He was of the opinion that the Gurkhas would be best for pacification of the hill tribes. It is thus clear that the first ever migration and settlement of the Gurkhas in Mizoram in and around the border was in 1872, right after the expedition was concluded, where the need for buffer villages emerged. The next big expedition, Tin Lusai expedition of 1889 to 1890. The Mizo stayed relatively quiet and peaceful after the first expedition for about a decade. From 1882, they started attacking the neighboring areas again. One particular incident that shook the British government was the murder of Stewart in 1888. So another expedition was carried out in which the British decided to put an end to the disturbances once and for all. The Tin Lusai expedition was an extensive one. It involved two columns coming from the north and the south. The task of driving through such a country was not an easy one. Large cuttings had to be made on the hillsides, and temporary bridges had to be erected over numerous streams. Such works fell on the Gurkha soldiers, who possessed a natural aptitude for this sort of work and being able to turn their kukri into any kind of cutting operation, from the sharpening of a pencil to the felling of a tree. The expedition proved to be a success for the British. In 1890, Captain Shakespeare was established in the South Lusai Hills. Captain Brown was established at Fort Aizol and was later replaced by McCabe. Thus, permanent military posts were set up in Aizol and Lunglei. So the earliest occupants of these permanent posts were the Gurkha soldiers. In the case of Mizoram, it was inhabited by a group of tribes who were never exposed to the world before and who naturally saw everyone else as the enemy. As such, the British needed to position people whom the tribe could relate to. Since majority of the Gurkha soldiers were Mongolian, they fitted the bill perfectly. And due to their adaptability in any kind of situation, climate and topography, the Gurkhas also felt at home. The Mongoloid Gurkhas belong to the hilly part of Nepal, where they practice, I have written slash and burn, but after hearing Joseph, I will say jhum cultivation. In this sense, they were quite similar to the Mizo. Therefore, it can be assumed that permanent settlement of Gurkhas in Mizoram began from the year 1891. And Aizol at the time was sparsely populated with a few localities. The making of Aizol as a proper town began with G.H. Locke, commandant of the Surma Valley Frontier Military Police. In the initial period, the Gurkhas were allowed to stay in the allotted areas only. However, many Mizo chiefs were eager to have them in their villages, that they even entreated the superintendent of the Lusai Hills to permit the Gurkhas to reside in their villages. So, in many places in Aizol, the Gurkhas were the first to occupy almost all localities. And one important Gurkha settlement that sprang up was 45th Mile Dwarban Road, which became a vibrant place for the retired Gurkhas. The Gurkhas who settled in and out of Aizol faced no hardship and prejudice from the natives. The administrators also treated them as equal with the Mizo. With the independence of India, the British started leaving the land. However, the Gurkhas decided to stay in Mizoram even after their administrators left. Slide, please. Next. Next. Okay. So, over the years of their stay, the Gurkhas of Mizoram have developed a distinct identity. They became quite different from their fellow Gurkhas in other places. Long residence in a particular place might have generated love and affection for the place as well as bears some influence. Since they live side by side with the Mizo peacefully,
They became much influenced by the Mizo way of life. Due to this influence, they have been able to create a community different from other communities without losing their language and religion. One important change has been the absence of caste system among the Mizoram Gorkhas. They might have practiced at the beginning of their settlement, but it is clear that they soon became a casteless society. Perhaps due to the fact that the Mizo do not have caste system and they soon adjusted themselves to the Mizo practice. This is clear from the fact that even a Brahmin such as Day-3 could marry a lower caste. In regards to marriage, arranged marriage is common in the early period, which soon changed. In this connection, a Gorkha woman named Binda Chetri argues that the Gorkhas of Mizoram do not practice dowry system, which is widely practiced among the Gorkhas outside the state. The girl's side need not give anything other than marriage paraphernalia such as a set of kitchen utensils and exchange of rings between the new couple. Another distinct feature is the funerary practice. In the other Gorkha communities, when a person dies, he is either cremated or buried according to his caste, and the dead body has to be taken to crematorium or graveyard as soon as possible. Purification ritual for the family takes place on the 13th day, performed with lavish puja, which involves a huge amount of money. In Mizoram, a deceased Gorkha is either cremated or buried according to his or the family wishes. Even when it is cremated, the body is put in a coffin, which is not practiced by any other Hindus. They also incorporated the practice of holding awake all night and gather in the house of mourning to comfort, sing, and help the relatives of the departed soul. They also keep a box where people could drop money, doing away with the tradition of giving tea leaves, sugar, ghee, and fruits. Another noticeable character of the Mizoram Gorkha has been the Sunday service that they borrowed from the Christian practices of the Mizo. They conduct Sunday service in temples for various deities by delivering sermons and chanting prayers. In the Sunday meeting, each household supplies packed prasad by rotation. These Sunday meetings help them to keep social contact among the community. They have also started a Sunday school for children, which is again borrowed from the Christian practice. In the Sunday school, community elders conduct theology classes designed for children. The Gorkhas have a feeling that there is no harm in imbibing good practices from other society. In fact, these practices help them to be closer as a community as they use these kinds of gatherings as teaching platforms to the youngsters, their culture and social values. The incorporation of these practices into their culture owed its origins to the different Gorkha associations, which again cannot be found in other Gorkha communities, thus making their social structure very different from other Gorkhas. These associations have been set up solely due to the influence of the Mizo societal associations. The three main Gorkha associations are the Gorkha Sang, the Gorkha Nari Samaj, and the Mizoram Gorkha Youth Association. Over the years of their settlement, the Gorkhas have acquired lots of practices from their Mizo breeding without losing their traditional practices. They have modified their age-old practices to meet the needs of the changing society, thereby becoming a unique community quite different from those communities elsewhere. Slide. Being a Gorkha in Mizoram, since the beginning of the Gorkha settlement, the relation between the two communities has always been cordial. There has never been a situation that creates hostility between the two communities. And after staying together for more than a century, there arose a certain sense of brotherhood. It seems that Mizo accepted Gorkhas from the beginning compared to other non-Mizo. Nirmal Kepun has a theory that Mizo did not accept Bengalis as they were too different from them. But when they came in close contact with the Gorkhas, who were mostly Mongoloid race and who had the same mindset, they were able to identify with them, and that created a friendship that lasts even today.
Pratap Chatri also says that language played an important role in the friendly relation between the two communities. Since majority of the Gorkhas could speak in Mizo fluently, it became easier for both sides to form a bond by being able to speak the same language. Food also played an important factor. The Gorkhas eat whatever the Mizo eat, except for beef. And this factor also created a certain sense of acceptance. And in many places, the Gorkhas do not feel as an outsider. They always take part in all the community works, and the Mizo consider them as good and honest people, which is reflected in the Mizoram crime record, which hardly shows any Gorkha name. Nirmal Kepun furthermore says that since the Gorkhas are not troublemakers, Mizo has no curiosity about them. They merely regard the Gorkhas as good neighbors and do not give them much attention. Perhaps this is the exact reason why the Mizoram Gorkhas stories have never been told before. He also says that the distinct social system practiced by the Mizoram Gorkhas are borrowed by incorporating the good practices of Mizo society, and that if the Mizoram Gorkhas are disparate from other Gorkha communities, it is all due to the Mizo systems. Pratap Chatri says that the Gorkhas in Mizoram are coping between two societies. The Mizo society, which is more open and unorthodox, while the Gorkha society is more conservative. So in between these two opposing societies, they are able to learn the positives and negatives, the pros and cons of each society, thereby creating a better community where everyone could unite under a common umbrella, irrespective of caste. So it can be said that since the beginning of their settlement, the Gorkhas have never been seen as an outsider by the Mizo. And on the other hand, the Gorkhas themselves also feel that they are not an outsider. Even when the Mizo sentiment was at the most vulnerable in the 1960s, the Gorkhas were accepted as their brothers. As such, they regard themselves as an insider. And even when Rambuai, the 20 turbulent years of struggle for independence, broke out, they felt that it was their duty to take part as an insider. So to conclude, after staying with the Mizo for a long time, the Gorkha community slowly imbibed the social practices of the Mizo society. And they are no longer bound by the rigid customary laws of Nepal. That helps create a distinct community by fusing the Gorkha's way of life and the Mizo way of life, blending the good practices from both communities. These changes made the Mizoram Gorkha community distinctive from the other Gorkha communities, thereby adding a rich cultural tapestry of Mizoram cultural variety. And I would also like to add that personally, I feel that for us Mizo, it is high time we bring out the non-Mizo, non-Christian history in Mizoram. The last slide, please. Yes. I have been lucky enough to find this picture who took part as the Mizo National Army. These are Gorkha youngsters. Thank you, everyone. Thank you very much.